Hello everyone, welcome to the Hindu editorial analysis session. So आज सेशन ने आम डिस्कशन करवा 28 of October ru 2nd November पर्यंत थिबा सब इम्पोर्टाट टॉपिक जहाँ जहाँ आमर द हिंदू एडिटोरियल कवर रही या व्यतीत आउ कुछ इम्पोर्टाट गवर्नमेंट पॉलिसी मानक ऊपर आज डिस्कशन करी. So last time आम अनेक गुड इम्पोर्टाट टॉपिक डिस्कशन करथिले लाइक द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, then highway to salvation in the Himalayas, climate hazards in India, India's choice in a world becoming bipolar again, essential business priorities in a changing world, Atal Bhujal Yojana, anti-defection law and democracy, Manipur violence. ये सब important topic ऊपर हमें last class रे discussion करिथिला. I expect समस्त यार notes formation करिसंती, notes तैयारी करिसंती एवं से notes को regularly revise करूछंती. आज अनेक गुड टॉपिक डिस्कस करी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक ना कहूँ सोलार एनर्जी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, हाउ दिस यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ एनर्जी लीड्स सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बा ये जेंडर बेस्ड राइट्स को केमती प्रोटेक्ट करूची. देन कट इन द इंटरसेक्शंस द हैरिस मल्टीकल्चरल टेंट, दिस इज रिलेटेड टू योर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक. एठी हम इंटरसेक्शनलिटी कोन डिस्कस करिवा. Then the underrepresentation of women in the judiciary. Judiciary means as lawyer, as an advocate, बा जज हिसाब रे वुमेन मानकर रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं लोअर कोर्ट मानकर हमको कम रु कम देखियो मिलछि as compared to the male lawyers or representation from the male side. So यार डिफरेंट एंगल ऊपर आज हम डिस्कशन करबा. या अपेक्षा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक अछि रिलेटेड टू फेडरलिज्म. फेडरलिज्म ऊपर गोटे टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करबा. सो ता पूर्व जस्ट ब्रीफ डिस्कशन जो माने नुआ लर्नर समान को पई कि व्हाई करंट अफेयर हम पई इंपोर्टेंट काहे हम ये टॉपिक को इतनी प्राधान्य काहे कि दोचे. सो यार बेसिक आंसर होची कि वर्तमान ओपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन लेवल ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी चलुची बट डिफिकल्टी लेवल ला क्वेश्चन आसुचे. पूर्वर मु देखैथिली ऑलरेडी कि लास्ट ईयर रो ओसीएस प्रीलिम्स इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन केमते डायरेक्टली आपनकर एडिटोरियल आसता. सो फॉर दिस पर्पस ओनली हमको एडिटोरियल पढिबाटा वर्तमान रो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अनुसार मैंडेटरी हो जाईची एवं करंट अफेयर को इंक्लूड करिया मध्ये हम पई मैंडेटरी हो जाईची. हैला देन द नेक्स्ट देखिबा हमें सोर्स एटी कोन अछि हम पाखरे को सोर्स को पढिबा दरकार. ऑलरेडी कहि सारछि कि द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस दिस इज द बेसिक और बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जोटा आपण पढिबा दरकार. Then EPW, Economic and Political Weekly, Yojana, Kurukshetra Magazine, Geography and You, Frontline, World Focus, Down to Earth, एमती अनेक गुड़े मैगजीन तो अच्छी आम पाखे बट प्रैक्टिकली इटा केते दूर संभव कि सबको आम पढ़ी तार जिस्ट करी ताको प्रिपरेशन रे यूज करछे ताको काम रे लगाउछे. सो गोटे जिंस म रेकमेंड करिवि कि द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस पार्ट याको पढंतु. ई पार्ट टाको समस्त करंतु. रेस्ट जहां रहिला ताको आम थ्रू मैगजीन बा आउ किछि वे रे कवर करि परिबा बा क्लास रो सेशन मानक थ्रू मध्ये कवर अप करि परिबा. सो तो एडिटोरियल एनालिसिस पढुचंती सेतरे को पार्ट को फोकस करिवे एवं को पार्ट को फोकस करिवेनी. मु ऑलरेडी कहि सारिछि कि व्हाट टू स्टडी इज नॉट इंपोर्टेंट, रादर यू शुड नो व्हाट नॉट टू स्टडी बिकॉज़ देयर इज अ वेरी वास्ट नंबर ऑफ सोर्सेस अवेलेबल इन द मार्केट. तो कोटा पढिबे जानिबा अपेक्षा कोटा न पढिबे जानिबाटा बेटर. तो एटी जतले न्यूज़ पढुचंती आपण बा द हिंदू न्यूज़पेपर पढुचंती सेठी पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल रिमार्क्स, लोकल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, डेथ, अवार्ड रिलेटेड न्यूज़ को लेस एम्फासिस देबे. ताले को सेगमेंट बा को सेक्शन को अधिक पढिबे. सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, देन जदि किछि नुवा वर्डिक्ट आसे किछि इंपोर्टेंट जजमेंट आसे फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट रो जदि किछि सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज अछि लाइक एलडब्ल्यूई आपनकर मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर बा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे इंसर्जेंसी, ये टॉपिक गुडा पढिबे. आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से जगह जदि इंडिया रो किछि इफ इंडिया इज अ स्टेक होल्डर बा इंडिया ऊपर जदि किछि इंपैक्ट पडुछि देन वल्नरेबल सेक्शन बा वल्नरेबल सेक्शन मानको पई थिबा स्कीम मानको ऊपर मध्ये एटी पढिबा दरकार. तो ये सब जानिया पई हेले प्रॉपर्ली निजर सिलेबस को जानतु, तार माइक्रो सिलेबस डिजाइन करंतु कि को पेपर रे को जीएस पेपर रे कोन टॉपिक अछि, को टॉपिक रे कोन सब टॉपिक अछि, तो से सब टॉपिक रे केति की पर्सन पढिबा उचित बा न उचित से सब गुडा का मोस्ट इंपोर्टेंट वे रे देखिबा दरकार. तो ठीक अच्छी गोटे टॉपिक अच्छी इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा आज फास्ट टॉपिक अच्छी रिलेटेड टू योर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे द करंट बाजे प्रेसिडेंट थिले हमर डोनाल्ड ट्रम्प
से कौन करछन ना नाउ गिविंग सम टाइप ऑफ derogatory statement to the another candidate. So why एठी तो political news को अधिक आसे rather direct topic को आसे कि topic कौन अछि बा issue कौन अछि एठी issue उची related to your intersectionality कौन intersectionality कहला हम कोन एटी बुझुचे तो another candidate who is there Kamala Harris तांको पाखरे मल्टी फैसेटेड आइडेंटिटी अछि फॉर पॉलिटिकल पोजीशनिंग कोन जेमति कि डाइवर्सिफाइड रिप्रेजेंटेशन तांको कोइ दउछ कि से इंडो अमेरिकन कैटेगरी को बिलोंग करछन सो तांको पाखरे डाइवर्सिफाइड लोक मानको पाखरे पहुंचवार रिप्रेजेंट करिवार क्षमता रहिछि देन टारगेट फॉर द अपोजिशन टारगेट काहे कि करूछि ए जगह रे तो अगेन दैट इज पॉलिटिकल न्यूज भाबछि पॉलिटिक्स को नवास के हम डायरेक्ट कांसेप्ट को आसी जोटा हमर एग्जाम रे कैमरा लागिवो सो एटी गोटे पॉइंट जोटा होछि हमर इंपोर्टेंट दैट इज इंटरसेक्शनैलिटी कहला हम कोन बुझछि सो व्हेन एलपीजी मॉडल हैज बीन अडॉप्टेड बा जहा हम ग्लोबलाइजेशन बोली कहूचे जहा हम ग्लोबलाइजेशन कोन ट्रीटिंग द एंटायर ग्लोब एज अ सिंगल मार्केट not only in the economic point of view but also from the socio-political point of view or from the socio-cultural point of view. Is agar hame कहूचे को globalization. So here we are treating the entire globe as a single village. Here we are treating the entire globe as a single village. So it intersectionality कौन? ये कुछ ये को भी race बा को भी कैटेगरी को कौन भी कम्युनिटी को बिलोंग करंतु बट समान को पाखरे इक्वालिटी रहबा दरकार कोथरे इक्वालिटी रहबा दरकार ना इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग सो ए रिलेटेड जदि हम देखिबा जून 2023 रे सुप्रीम कोर्ट मध्ये किछि वर्डिक्ट दैथिले दिस इज रिलेटेड टू वायोलेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन इट इज सुप्रीम कोर्ट कहले जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना अछि इट रेस बेस्ड एडमिशन दिया जाउछि and that race based admission is unconstitutional and it violates equal protection clause and racial stereotyping so ये कुछ particular race रा against ये पड़ोछ जहाँ हम intersectionality कहूचे so minority representation ऊपर जब हम देखिबा this decision is likely to decrease African American enrollment at the top universities benefit को मानको मिलिबो ना Asian American admission मानको increase चलियो और बढ़ी चलियो लास्ट क्लास रे मु कहितली ऑलरेडी मन थिबो समस्त कि चाइनीज स्टूडेंट मैक्सिमम अट्रैक्शन से मानकर कोन ना यूएसए एजुकेशनल हब यूएसए रो एजुकेशनल हब मानकर मैक्सिमम को मानकर एनरोलमेंट होची ना चाइनीज स्टूडेंट मानकर एनरोलमेंट होची ना ए जो इंटरसेक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ऊपर हम डिस्कशन करूची ये माइनॉरिटी ग्रुप ऊपर केमती इंपैक्ट हेबो कंटेम्पररी पॉलिटिक्स टाइम पीरियड सो प्रथम कथा हला देयर विल बी कंपीटिंग इंटरेस्ट बा कंपीटिंग इंटरेस्ट कोन इन वन साइड अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड एशियन अमेरिकन्स बा जोटा थिला पूर्वरु हमर कला गोरा भेदभाव कोतरे अगेन डिपेंडिंग ऑन द रेस ये तार ऊपर ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करिवो एवं इट मे लीड टू अ वायलेंस बा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू मेजर ग्रुप्स और टू मेजर कम्युनिटी इट इज नेवर डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इन डेमोक्रेसी तो जो दिन सेटा हमको एटी देखिया को मिलची इंटरसेक्शनल कॉन्फ्लिक्ट then there will be political polarization kon hoy there will be issues like immigration welfare policies it will create further division यदि वेलफेयर पॉलिसी जेमती मु एजुकेशन ना कथा कहली लाइक रिजर्वेशन यदि किछि सेक्शन ऑफ सोसाइटी बा जो माननको कोन व्हाइट बोली माना जाउछि समान को पय जे रिजर्वेशन मिले देन ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द सेक्शन पय इट विल क्रिएट अ डिवाइड और दे विल बी अंडर इनजस्टिस then there will be influence on the electoral dynamics ऊपर मध्ये influence पड़ियो काहे ना पॉलिटिक्स को पार्टी आसीबनी बा से पार्टी कहा को सपोर्ट करूची ये सब ऊपर यार इंपैक्ट पड़ियो सो दीज आर द बेसिक पॉइंट जहां पर हम डिस्कशन कली कि हाउ इंटरसेक्शनलिटी will create conflict now come to the minority rights हमें minority rights ऊपर इतने प्रकार डिस्कशन काहे की करूची and this is all about your social justice तुम्हें कहबो सर democracy is all about the game of numbers जे मेजॉरिटी रे अछि से ही डेमोक्रेसी रे सरकार फॉर्मुलेशन करियो तले माइनॉरिटी मानक ऊपर इंपोर्टेंस दवर आवश्यकता होची दो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट गेम ऑफ नंबर्स स्टिल we have to protect the minority rights this is the basic hallmark or the basic cornerstone of study of democratic principle कहूची जदि वो डेमोक्रेसी नंबर ऊपर बेस करूची मेजॉरिटी ऊपर बेस करूची माइनॉरिटी मानन को मध्ये हमको रेस्पेक्ट देवा दरकार एवं समान को राइट्स को मध्ये हमको प्रोटेक्ट करिवार आवश्यकता रहची देन ये हला दिस इज हॉलमार्क ऑफ द सिविलाइजेशन माइनॉरिटी राइट्स
सेकंड इज योर बेसिक स्ट्रक्चर जोटा हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस रे पढ़िथिले ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर माइनॉरिटी मानक राइट्स को प्रोटेक्ट करबा होची बेसिक स्ट्रक्चर प्लस आर्टिकल 30 जदि हम देखियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट क्रिएट्स अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया हैना सो एठी जोडा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अछंती सेमानक पई गोटे डुअल टेस्ट क्राइटेरिया अछि 1963 रे आसला a six judge bench of Supreme Court observed that every government regulation in respect of a minority institution it shall be valid only when it satisfies the dual test. Dual test kon it is regulative and not destructive of the organization's minority character. ये से organization minority character को destroy न करवा दरकार. Plus जो minority institution अच्छी minority institutions ये कहूँ it makes the minority institutions an effective vehicle for minority education. So minority institution मानक को minority education spread करिया पई ये यूज करिया होची so there are certain other judgments जोडा को minority institution rights को protect करूची बा ए institution मानक पाखरे अधिकार अछि समानकर टीचर एवं स्टाफ मानक को अपॉइंट करिवा ई तीन चारिटा जजमेंट र ना लिखिछि आप मन रखिबे केरला एजुकेशन बिल केस 1957 देन योर एटा को प्रूस्ट केस बोली जाना जाय फादर डब्ल्यू प्रूस्ट केस 1969 देन योर मदर प्रोविंशियल केस 1969 then your Ahmedabad St. Xavier's ये केस 1974 ये चारिटा इंपोर्टेंट नाम मन रखिए बहुत समय ये चारिटा को लेके क्वेश्चन आस्ता है प्रीलिम्स रे भी डिफरेंट टाइप रे क्वेश्चन आसीछि बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए नारू ही भाउचे समस्त मन नहीं पारिबो इट इज रिलेटेड टू योर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हला ये गला गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक एठी कोन कोन कहली गोटेला इंटरसेक्शनलिटी कोन कहली पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऊपर अधिक डिस्कशन हेछि जदियो ये पर्टिकुलर टॉपिक रे बा ये एडिटोरियल रे बट सेथुर हमको देखिवार अछि कोटा हम एग्जाम पई रिलेवेंट सेति मु स्किप कर देली पॉलिटिकल पार्ट टाको देन योर सोशल पार्ट बाय इंटरनेशनल एस्पेक्ट रे सोशल जस्टिस में जति दरकार सेति डिस्कशन कर नाउ नेक्स्ट इज द प्राइवेट सेक्टर होल्ड्स द की टू इंडियाज ई बस पुश ई बस सर्विस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आसीची ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गुडा आसीची एथिरे हम कोन करछ ना बैटरी यूज करछ बैटरी यूज करके आप सब यूज करछ स्कूटी सब आसलाने देखियो समस्त सेमती इन द सेम वे दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट यूज ऑफ और एनफोर्समेंट ऑफ ई बस को एनफोर्स करिया पई ये कोच देन व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द प्राइवेट ऑपरेशन एको सब एको के कंप्लीटली वर्तमान जदि हम देखिबा प्राइवेट ऑपरेशन इंडिया रे ना 93% बस गुडा को बिलोंग करछि का हम प्राइवेट सेक्टर ताको बिलोंग करछि प्राइवेट सेक्टर देन देयर इज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव प्राइवेट ऑपरेशन बा प्राइवेट सेक्टर पकरे एते अधिक शेयर थिबा सत्वे बा अधिक कौन कंट्रीब्यूशन थिबा सत्वे बस सेक्टर को यार चैलेंज कौन फेस करछि प्राइवेट सेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंजेस फेस करछि कि दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव एमान को पकरे फाइनेंशियल इंसेंटिव नै एवं सरकारी स्कीम थ्रू रे एमान को कोनस प्रकार सब्सिडी मिलि पारो एवं इनिशियल कॉस्ट आरंभ करिया पई ये प्रोजेक्ट को कॉस्ट अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहा हम कहू पेट्रोल पंप मिल जाउ सब जगह पेट्रोल बा गाड़ी को रिफिल करिया पई फ्यूलिंग पर्पस बट व्हाट अबाउट द चार्जिंग हम जदि ईवी यूज करूचे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करूचे ताको तो पुनी चार्ज करिया को पड़िबो ना गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एटा चार्ज करिया पई हम पाखरे सेम दिछि सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नाही एंड देयर इज द ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी एही कारण मानक पई बट दीज आर द चैलेंजेस दैट द प्राइवेट सेक्टर इज फेसिंग नाउ प्राइवेट सेक्टर यदि ए सेक्टर को ईवी बाय ई बस सेक्टर को ये कंट्रीब्यूट करे by यदि इन्वॉल्व हुए ताले हमको बेनिफिट कौन मिलियो ना मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलियो इट विल बूस्ट ई मोबिलिटी ये ई मोबिलिटी को बूस्ट करियो एनवायरमेंटल इंपैक्ट एवं ग्रीन हाउस गैस ये सब कमी जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट कमी जो फ्यूएल कॉस्ट कमी जो एवं वी कैन हैव अ लॉन्ग टर्म सेविंग हमें लॉन्ग टर्म रे सेविंग करि परिया ये वाला टॉपिक 2 तापर आसीबा हमें टॉपिक 3 को So topic 3 is basically all about under representation of women in the judiciary. Judiciary re under representation of women. Now again women belong to your vulnerable section of society on the basis of gender. जे अपन article 15 clause 3 of the Indian Constitution कहबे देखिबे ये कहूची कि for the in favor of the women or in favor of children the government of India has the authority to formulate different type of laws. ये कौन करि परबा different law formulation करि परिबो बा welfare policy आनि परिबो and that will not be violation of or that will be not like a discrimination by positive discrimination बोली कहि परिबा सो एटी हमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहूची कि जुडिशियरी स्पेशली हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट रे जो माने जज अछंती बा जजशिप प्रोफेशन रे नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट इज लेस और देयर इज एब्सेंस ऑफ वुमेन इन द जुडिशियल सिस्टम
So it is glaring and it is widely discussed. Almost always it revolves around the entry level measures. So entry level कोणतु बा entry level कौन है जो profession देखुचे legal profession एठी entry करिया पड़े either as a you can enter to the lower judiciary without having any experience, or you can go for a legal practice as an advocate. Now in these profession they are elevated to the higher judiciary. Higher judiciary के लिए हम high court supreme court को बुझे. So legal practice को ही number of women those who come to this field they are very less, and even number of women in this field means educational admission जदि हम देखिए legal sector को male dominated sector बा number of entrance जदि हम देखिए male मानकर अधिक as compared to the female. So that's सेति पई हमको insufficient number of candidate देखिया को मिले कोठी insufficient candidate in legal course in admission to legal courses, legal basic course like LLB, and in practice as well as in legal practice as an advocate. एटी number of women मानु का कम देखिया को, and it's automatically women lawyer कमी गले judge मानु का number मते कम. This is a very genuine fact. But apart from that, I mean here we'll be talking about equality and equity, or non-discrimination, or equal representation of women, or women empowerment. So it is Supreme Court got a report anile जहाँ को जे State of Judiciary Report 2023 which shows 36.3% of women in the district judiciary. Only kete कहली only 36.3% in the district judiciary. So 14 state रे जदि हम देखिबा more than 50% of candidates successfully recruited in the civil judge junior division they were women, and at the higher levels the representation of judiciary falls short. it is lower level ले already कहली कौन कौन अछि एंट्री करिया पई को वे जज हे परियो ना जज हा पई लोअर जुडिशियरी जण जाई परियो. लोअर जुडिशियरी कोन जोडा आपनकर ओजेएस थ्रू रे ओडिसा रे जाउछन, ओडिसा जुडिशियल सर्विस थ्रू रे जाउछन हैला, सिविल जज जोडा डायरेक्टली होचंती. देन आउट रहला कोन ना डिस्ट्रिक्ट जज हे परियो डायरेक्टली, डिस्ट्रिक्ट जज हे परियो. देन हाई कोर्ट जज हे परियो डायरेक्टली. तो डिस्ट्रिक्ट जज हा पई केते ना मिनिमम 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, 7 year of practice experience थिबो. देन एटी गोटे एग्जाम हुए, ए एग्जाम को किए कंडक्ट करंती ना हाई कोर्ट कंडक्ट करंती. देन हाई कोर्ट जज हा पई हेले कोन ना 10 year of practice experience थिबो, 10 years of practice experience जेति एग्जाम हुए. एटी का द्वारा हिताय कोलिजियम सिस्टम जोटा हम देखु छे, कोलिजियम सिस्टम एटी हाई कोर्ट पाखरे काम. ए को जे लोअर जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन इज क्वाइट गुड, बट इन केस ऑफ हायर जुडिशियरी रिप्रेजेंटेशन ना ग्रेजुअली कमी जाउछ. So January 2024 सुधा High Court रो 13.4% of judges in High Court and 9.3% judges in the Supreme Court they are women. देखो तो percentage ratio टा केते लो अछि 13% एवं 9%. So देखिबे High Court मानकर देखिबे women judge बा female judge केते थे बहुत कम थे, जणे दुई जण थे maximum गोटे गोटे High Court रे, जणे बा दुई जण थे. ओडिसा High Court देखंतु currently जदि हम देखिबा मात्र जणे ही women judge अछि. So other as compared to other judge number ta kam hi jauchi ba representation kam hi jauchi. So the representation of women is uneven across high courts, with the states include Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Odisha, Tripura, Uttarakhand. So either no women judge or only one woman judge. Odisha case kahi Odisha condition ne currently we have only one woman judge. ये गोटे important point मन रखियो related to your equality. Now policy gap between हमको कौन देखिया पे मिलो छि, why there is the under representation of women in the judiciary. This is a vicious cycle. I discussed about the cycle because number of student admission नउछंती कम, number of student or number of legal professionals lawyers entry करथुनी profession को कम, automatically number of judge मानकर number भी कम जिवो. So it is a part of vicious cycle. So women are excluded while even those women who have been included are unable to rise to positions of power to address these concerns. So access for women in judiciary, it is basically you can see at two levels. One is at entry, second one is at retention. केते जण एंट्री करूछंती एवं केते जण एटी रिटेन करि कर होछन. तो इला मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ए दुटा पॉइंट मन रखिबे. एंट्री करंती कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस रिटेन करंती मध्ये कम नंबर ऑफ कैंडिडेट, वेरी लेस कैंडिडेट्स हैला. सो बेसिकली को माने रहन जो माने बिलोंग करंती ये फैमिली को, ये गोटे लीगल प्रोफेशन इज अ वेरी हार्ड प्रोफेशन. सो एठी को माने रहंती ना जो माने लीगल फ्रैटर्निटी को बिलोंग करंती बा जो माने फर्स्ट जनरेशन लॉयर से माने किछिबा एठी के कष्ट, नेक्स्ट जनरेशन लॉयर
they can be here in a very well manner. So we have to prioritize women's need. Greater participation is required. We should have women-centric perspective which identifies specific issues which hinders future career growth and progress. ये जो statement गुड़ा अच्छी है directly आपको copy paste करके answer sheet रे लिख पारिबे तो OCS means examination दउचंती सेठी बुझी पारंते ना बहुत स्टूडेंट पचारन सर नोट्स रे कोन लिखियो आंसर रे कोन लिखियो ये जो नोट्स दिया होची एथिरो बुलेट पॉइंट करके भाई पॉइंट उठे के अपन डायरेक्टली आंसर शीट रे लिखियो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट देन जो माने जदि हम देखिबा कोन कहले ऑलरेडी जो माने बिलोंग करछंती लीगल फ्रैटर्निटी को बा लीगल ऑलरेडी समानकर पूर्व जनरेशन ने के ये प्रोफेशनल अछंती सेमान को किस्टिबा टिके सहज होई जाय एज कंपेयर टू द न्यू कमर्स नाउ अनदर स्टेटमेंट होची former judge Justice 𝐒𝐄𝐈𝐀, one of the few women judges in Supreme Court, recently noted on conscious gender bias in courts which results in women judges being sidelined in the administrative duties. So जो माने women judge सेमान को administrative काम कम दिया जाए कोर्ट मानकर तीटा फंक्शन अछि समस्या अछंती जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट रो अर्थ कि जुडिशियल डिसीजन कोर्ट हिसाब रे पास करियो प्लस जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मते मानक पाखरे अछि का पाखरे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पाखरे नाही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रो एडमिनिस्ट्रेशन इज विथ देम ओनली सो ये कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रे वुमेन जज मान को इंटरफेयर करने दिया जाए नहीं so it shows the fact that according to information published on high court websites none of the high court building committees aside from Delhi, Hyderabad, Himachal Pradesh currently have seen a single woman judge as a member so high court building committee रे ए तीनटा कोर्ट को छाडला पर कोन जगह रे वुमेन मेंबर नहति याको मध्ये हाइलाइट कर लिखि पारि as highlighted by former judge Justice 𝐒𝐚𝐴𝐀. Then infrastructure needs for women, they are often deprioritized. So automatically ad hoc decisions are taken like the construction of a single toilet block or a temporary waste disposal bin being which is very much insufficient as per the women's requirement or women judge requirement. So in the absence of adequate representation in high court registries and judicial academies, women perspectives and experience for policy making addressing bias through gender sensitization training are not fully taken into account. So female centric approach दरकार female centric recognition एवं priority मान को मध्य accept करिवार आवश्यकता रही to increase women's participation. ये गला topic 3 related to women's participation. Topic 4 को आसीबा solar a game changer in the women's empowerment. ये पूछे what is the impact of decentralization? Decentralization means impact of decentralization of power generation. Decentralization of power generation यार societal structure ऊपर impact अछि plus environmental sustainability ऊपर मध्य impact अछि ये कहूँ the ability to generate energy close to where it is consumed it unlocks a cascade of benefits beyond mere convenience so socially economically and developmentally solar places power so ये power जो हमें पाउचे का solar energy थ्रू पाउचे कि how it is related to your empowerment मैं ऑलरेडी डिस्कस करथिली पूर्व रिलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस हमें प्रियम्बल ले पढिचे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस बाजा को सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस को कहूची आ गोटे नुवा फॉर्म ऑफ जस्टिस ऊपर मो डिस्कशन करथिली दैट इज क्लाइमेट जस्टिस एटी कोन होची ना क्लाइमेट चेंज को जो मानकर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम अछि सेमानकर राइट्स ऊपर कम इंपैक्ट पड़छि व्हेयरएस अन्य मानकर राइट्स ऊपर अधिक इंपैक्ट पड़छि एग्जांपल current generation present generation अधिक resource use करछि whereas तार impact पड़छि next generation ऊपर पड़े which is not sustainable development in the same way जो माने developed countries से माने यूज करछन maximum resource climate change होछि तापर impact पड़छि कहा पर ना under developed country माने ऊपर जदि हम कहबा रूरल लागू अर्बन एरिया रे अधिक एनर्जी कंजम्पशन क्लाइमेट चेंज को अधिक कंट्रीब्यूशन बट इम्पैक्ट पड़छि नेगेटिव इम्पैक्ट अधिक रूरल एरिया ऊपर जदि हम पुअर वर्सेस रिच कहबा रिच अधिक कंट्रीब्यूट करछि क्लाइमेट चेंज को फल भोगु चिके ना पुअर सो एठी हम देखिले कि एठी क्लाइमेट जस्टिस कोन जो मानकर कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज अधिक से मानकर राइट्स टा अधिक वायलेट होनी रादर जो माने वल्नरेबल सेक्शन एससी एसटी ओबीसी बिलो द पॉवर्टी लाइन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जेंडर बेस्ड थर्ड जेंडर वुमेन डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन ओल्ड एज बा जो माने कोन अर्बन एरिया जति देखियो हम अर्बन पोर लाइक योर डिलीवरी एजेंट्स जो माने एटी जोमेटो स्विगी ओला एटी काम करछन बा अर्बन पोर समान को ऊपर अधिक इंपैक्ट पहुंच सो हमको एटी कोन दरकार ना वुमेन एम्पावरमेंट पई वी नीड अ शिफ्ट इन केस ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सो वुमेन often bear the brunt of poor energy access रहिले this it impacts their health
safety and economic potential. So solar technology आपको address करछि. It belongs to your article 21. Article 21 कौन कहउछि? Right to health, right to safety ऊपर discussion करछि. So right to health इति हम करउछि बा right to a dignified life इति हम करउछि. जदि हम देखिबा गुजरात लिटिल रन ऑफ कच्छ, women salt farmers have transitioned from expensive diesel to solar pumps. So सेमानकर इनकम को बूस्ट करछन केतना 94%. कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करछन बाय 1,15,000 metric tons annually. So there are different initiatives like the Barefoot College India re, the Gramin Shakti Bangladesh re, Solar Sister Africa re, which empowers women to become solar engineers, benefiting millions and improving community health and community safety. So when we talk about community health, community safety, this is your distributive rights. This is your distributive rights, distributive human rights. Human rights are basically three प्रकार. What are civil and political rights? Second, socio-economic rights, socio-economic and cultural rights. Third, distributive rights. So right to environment or right to clean environment, this is the distributive rights. Hela important point jaha jaha ko mark kari rakhe. So solar basically when it is used as a localized solution, it advances women's financial inclusion. It enables income generation. Healthcare facility को ये enable करछि, increase करछि. So solar employs more women than any other energy sector. Most important line mark करी रखिए. Solar sector रे maximum women empowerment होछि as compared to other. Agriculture पढेला बेले मु कहितली women माने सबु अधिक कोठी अछन चा चाष रे देखिबे, टी गार्डनिंग रे बा टी प्रोडक्शन रे अछन. And second एठी कहली कोठी अछन ना in the solar sector as compared to other energy sector. So 2022 रे जदि हम देखिबा solar photovoltaic industry alone, it provided jobs to 4.9 million people. So 40% with women accounting for 40% of the workforce. Hela most important point. So mark करके रखिए लिखिए. Now it is very clean. हमें देखिए solar energy is clean. Solar energy is scalable. Scalable माने ताको expand करके हमारे जैसे कि quantity of energy दरकार we can get it from the solar sector. But there are different challenges. Still, despite of being a clean and scalable energy source, it has different challenges. कौन कौन? प्रथम कथा चैलेंज कौन? टेक्नोलॉजी को हार्नेस करबा कष्ट. द्वितीय हला याको एते इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आर बहुत अधिक एंड इज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बा टेक्नोलॉजिकल एडाप्टेशन एगुडा कहूची डिफरेंट चैलेंजेस. ये कहूची सोलर सेक्टर अपलिफ्ट्स द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के माने जो मानकर सोशल जस्टिस वायलेशन होची, जो माने वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. So unlike coal, which has improvised resource-rich regions, solar offers sustainable path forward. So India's coal mining districts exemplify the resource cost where local communities they suffer from poor health, education, and living conditions. So there is high incidence of poverty, more than 50%, 50% poverty. So distributed solar systems link energy production with community well-being, driving climate resilience. Off-grid projects provides clean energy to areas without traditional electricity, supports economic development in rural India. Rooftop installations, mini grids, they are very scalable, they are eco-friendly, they create local jobs having a very less impact on the environment. So it हमको दरकार कोन ना, we need effective community management or community participation that is crucial for successful of these projects. So India जति हम देखिबा formalized community institutions like self-help groups, farmer producer organization, पंचायत राज institutions, ये सब को हम integrate करि परिया for village infrastructure planning. So जो जगह फॉर्मल स्ट्रक्चर नाही सेठी हम रूरल एनर्जी कमिटी क्रिएट करि परिबा. कोन करबा? रूरल एनर्जी कमिटी एठी हम क्रिएट करि परिबा. सो एठी देखुछ हम कोन होउची ना सोलर टेक्नोलॉजी डेवलप होउची. सो बेसिकली तीनटा चैलेंज हम करि देखिबा पड़छ. कोन कोन चैलेंज? सोलर टेक्नोलॉजी जेते अधिक डेवलप करूची एठी हमकु सेते चैलेंज देखिबा पड़छ. कोन ना प्रथम हला जियोग्राफिकल इंबैलेंस हला. So basically geographical imbalance कोन ना डेवलपमेंट गुडा को कोठी होउची अधिक इन्वेस्टमेंट कोठी ना डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप बा डेवलपिंग कंट्री रे इन्वेस्टमेंट कम. सो अफ्रीका रे बहुत कम डेवलप इन्वेस्टमेंट. देन सेक्टरल imbalance तने लार्ज स्केल सोलर फार्म सेमान को मेजर फंडिंग मिलुची, स्मॉलर फार्म को मिली पारु. मोस्ट इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन इन जस्ट 2 countries. So it disrupts supply chain एवं प्राइस बढ़ाई दूची. अलगा जगह रे मैन्युफैक्चरिंग हमको देखियो मिलु. ये सो these are the problems that we are facing in this particular sector. तो एठी हम कोन देखिले. Now here we are talking about a policy formation.
or we're talking about policy and gender. Now this policy, this is a climate justice. This policy will empower women by gender development karibo, gender upliftment karibo, by gender related biasness women empowerment kariba द्वारा जोड़ा gender basis रे अंडर डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन अच्छी सेटा एठी इराडिकेट हो परिबो बा तक हम रिड्यूस करि परिबा. सो जो पॉलिसी गुडा का दरकार ये पॉलिसी गुडा को पॉलिसीज फॉर क्लाइमेट जस्टिस बोली कुहा जाय. So to actually make solar energy to truly empower communities, it must be inclusive, it must be equitable. Inclusive means it must be for all, it must be equitable, equally distribute हवा दरकार. So केवल वुमेन माने यार मेजर बेनिफिशियरी हवार आवश्यकता नहीं, rather इटी मेजर गेम चेंजर हिसाब रे बा रोल चेंज करवा दरकार हैला. So this is all about your reevaluation of the energy policies. कौन दरकार reevaluation of energy policies is the need of the hour, and in the same way हमको next policy गुडा कटी formulate हवार आवश्यकता अछि. So ये वाला important topic. Now next topic को आसीबा. अच्छा next topic को आसीबा पूर्वरु एठी कितना important, let's discuss about some of the important schemes. किछि important scheme कहूची तापरे आमे आउ गोटे important topic को आसीबा. तले हमें फर्स्ट स्कीम को आसीबा. मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड समस्त जानि छे कि इन द इकोनॉमी वी हैव थ्री इंपोर्टेंट सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. कौन कहली? प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is all about your agriculture, secondary sector is about manufacturing, and tertiary sector it is all about service sector. Apart from that, economic session में more discussion करछे about quaternary and quinary sector ता ऊपर समझते पढ़िथिबे. सो एठी ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या नाम भी आमे जानि पड़छे. एठी तीनटा पॉइंट हमर इंपोर्टेंट कोन ता गोटे हला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आ हला फंड. ता माने फंड जेहेतु अच्छे हम बुझछे ये किछि पई गोटे फाइनेंस दोछि और फंडिंग प्रोवाइड करछि. प्रथम कथा. द्वितीय कथा होछि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ व्हाई इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्टेंट फॉर अस इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर रे जदि हम देखा टोटल आउटपुट बा टोटल प्रोडक्शन केते होछि, से प्रोडक्शन इनपुट टू आउटपुट रेशियो केते हम इनपुट देइछे, केते टंका खर्च करिछे এবং आउटपुट केते पाइले, बा इफेक्टिव एग्रीकल्चरल आउटपुट केते अछि हम पाखरे ताकू बाहर करिया पई बा ताकू डिफाइन करिया पई इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट. मने कर मु कहबी कोल्ड स्टोरेज. प्रोडक्शन हे गला, प्रोडक्शन हेला परे हमें ताकू स्टोर तो करबा दरकार, अदरवाइज फूड सिक्योरिटी हम अचीव करि परिबा. हम व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, से समय हमको स्टोरेज करबार आवश्यकता रहिछि. सो वी नीड कोल्ड स्टोर व्हिच इज अ इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट माने अमल हेला परे स्टोरेज को बढ़ेइबा पई बा छितरे वैल्यू एडिशन करिया पई, वैल्यू एडिशन करिया पई हमको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार. सो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को कैटर करिया पई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड रे इन्वेस्टमेंट करिया पई एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होछि. ये गोटे सेंट्रल सेक्टर रो स्कीम एवं इंप्लीमेंटिंग एजेंसी किया को इंप्लीमेंट के करिवो ना नाबार्ड को इंप्लीमेंट करिवो. के करिवो कहली? नाबार्ड इंप्लीमेंट करिवो. एठी आ गोटे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. नाबार्ड को फाइनेंशियल ईयर रे आसीतिला एवं केबे आसीतिला? मोस्टली क्वेश्चन आसे नाबार्ड को फाइनेंशियल ईयर रे आसीतिला. एटा को समस्त आंसर देबे कमेंट हुए. Now come to who are the beneficiaries. ये जो फंड ऊपर को डिस्कशन कली, ये फंड रो बा ये स्कीम रो बेनिफिशियरी को माने प्रथमतः प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बा एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर जो माने बा नुवा स्टार्टअप, एग्रो स्टार्टअप जो माने एग्रीकल्चर फील्ड रे स्टार्टअप आरंभ करूछन. सो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अफोर्डेबल करिया पई, फाइनेंशियली वायबल करिया पई समस्त जेंति ताको यूज करि परिबे, बहुत अधिक टंका जेंति न पडु समान को कोल्ड स्टोरेज करिया. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ भारत कैंपेन. एटी मन रखिबे भारत रो फुल फॉर्म कोन? भारत कैंपेन, बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज अ कैंपेन. ये कैंपेन ना ऑब्जेक्टिव होची मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करिया को मानको ना टू द पीपल, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस टू मोबिलाइज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. जेते गुडे एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट अछि से रिलेटेड बैंक माने केमति इजीली लोन डिस्पर्स करन बा बैंक मानकर गोटे कॉम्पिटिटिवनेस, बैंक मानक भीतर गोटे कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करबा होची भारत कैंपेन रो बेसिक ऑब्जेक्टिव.
So this is a part of this fund is a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan बा जो हम कहते self reliant India campaign. Self reliant India campaign ये केबे आसला? It was announced by the center in May 2020. केबे? May 2020 रे आस. So this is the first scheme जहाँ को हमें cover करले. बर्तमान second scheme को आसीबा PM-KISAN. Most important scheme PM-KISAN और CM-KISAN many times it is found in the news. न्यूज रे हमको एटा बहुत समय देखा पई मिलुची. तो यहाँ पर we can expect question. यार basic objective कौन, basic purpose कौन? To supplement the financial needs of all land-holding farmer families. Kuthre, in procuring various inputs and also domestic needs. Domestic need एवं input पाई ये financial need को cater करूची. को माने यार beneficiary ना all the land-holding farmers. जितने जन farmer अछन सब टाइप रो land-holding farmer होतन यार beneficiary. Plus exclusion कौन बेनिफिट कौन एटी मिलुची ना 6000 पर ईयर कैश 6000 पर ईयर दुई प्रत्येक 4 मास रे थरे 2000 टका मिलिबो प्रत्येक 4 मास रे थरे 2000 टका मिलिबो सो टोटल एनुअली 6000 टका एटी मिलुची सो इगोटा सेंट्रल सेक्टर स्कीम एतने 100% फंडिंग आसे कोठु ना सेंट्रल गवर्नमेंट ये केबे टू ऑपरेशनल ना 2018 नो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कहली कि सपोर्ट इनकम सपोर्ट दोउची 6000 पर ईयर ऑगमेंट फार्मर्स इनकम फार्मर को एगोटे इनकम लेवल ले सपोर्ट दोउची हला तो को मन को मिलिबो फैमिली ऑफ द फार्मर इंक्लूडिंग द हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन तो ये जो फार्मर फैमिली आपको आइडेंटिफाई के करिवो आपको आइडेंटिफाई करिवो स्टेट गवर्नमेंट बा यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के आइडेंटिफाई करिवो आपको आइडेंटिफाई करिवो स्टेट गवर्नमेंट बा यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक अछि एति डायरेक्टली एटा बैंक अकाउंट को जिवो लाइक डीबीटी एथरे किछि एक्सक्लूजन कैटेगरी मध्ये अछि समस्त को स्कीम रो बेनिफिट मिल परिबो नाही किछि एक्सक्लूजन अछि को मान को एक्सक्लूजन अछि हु आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ना ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर जो माने फार्मर फैमिली जो मानकर जो माने बिलोंग करतनी फार्मर बा प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो माने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को थिले पूर्वरु बा वर्तमान अछन फार्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर मेंबर ऑफ लोकसभा तो एको देखि के जानि पड़ते को माने एथरे एक्सक्लूड हेबे एको डिस्कशन बेसी करिवार किछि आवश्यकता नाही जो माने सेंट्रल गवर्नमेंट रे अछंती स्टेट गवर्नमेंट रे अछंती हला बा जो माने पेंशनर फैमिली जो मानकर मंथली पेंशन इज मोर देन 10000 or more all persons who paid income tax in the last assessment year professionals like doctor engineer lawyer chartered accountant architect हला एमाने सब आसीबे एमाने इस स्कीम रो फायदा उठै परिबे नाही ये गला सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम बर्तन थर्ड स्कीम को आसीबे हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कोन कहली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम ही जणा पडुची क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम याकू देइथिबो किए को मिनिस्ट्री रेस्पोंसिबल नाम ही जानि पडुची अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फसल बीमा योजना इन्वॉल्वमेंट कहार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव कोन ना क्रॉप प्रोटेक्शन व्हाई क्रॉप प्रोटेक्शन एटा बुझिया पई हेला ना ये स्कीम गुडा को एको हमें इकोनॉमिक्स पढेला बेले मध्ये पढाई छी जो एग्रीकल्चर हमें देखु जे एग्रीकल्चर इज एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस कोन कहली एग्रीकल्चर इज अ प्रोसेस कोन हो जे एटी प्रोसेस रे देखंतु बुझंतु एटी कोन करछे ना हमें किछि इनपुट नउचे एवं फाइनली हमको प्रोसेसिंग हेला परे बा हार्वेस्टिंग हेला परे हम एटी आउटपुट पाउ सो एग्रीकल्चर रे हमको रिफॉर्म प्रत्येक स्टेज रे दरकार हो इनपुट रे हमको कोन दरकार ना इनपुट रे मोस्ट इंपोर्टेंट हो हम पई के ना सीड मंजी दुई रे कोन दरकार ना इरिगेशन दुई रे कोन कहली इरिगेशन तीन रे कोन कहली तीन होची फर्टिलाइजर चार रे मु लिखि दोची टेक्नोलॉजी चार रे टेक्नोलॉजी सीड्स रे हमें को टाइप ऑफ सीड को यूज करि परबो ना हाइल्ड वैरायटी सीड यूज करि परबो जो गुडा को अधिक प्रोडक्शन देबे आउ कोन यूज करि परबो ना जीएम क्रॉप्स या पर वर्तमान रिसर्च चाली छी जीएम क्रॉप आको यूज करि परबो इरिगेशन रे हमें स्प्रिंकल इरिगेशन यूज करि परबो लबा ड्रिप इरिगेशन यूज करि परबो वाटर कंजर्वेशन बढ़िया पई वाटर रिटेंशन बढ़िया पई बा वाटर यूजफुलनेस को बढ़िया फर्टिलाइजर रे वी कैन गो फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बा जैविक कृषि जाको कहआ जाउची टेक्नोलॉजी रे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करि परबो लाइक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी chemical technology biotechnology information and communication technology mechanical technology रे हम कोन यूज कर परिबा मुको डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स ट्रैक्टर कल्टीवेटर हार्वेस्टर पावर टिलर ये सब यूज कर परिबा मैकेनिकल टेक्नोलॉजी
केमिकल टेक्नोलॉजी रे कोन यूज करि परिया फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वीडिसाइड्स ये सब केमिकल टेक्नोलॉजी अंडर आस बायोटेक्नोलॉजी रे कोन यूज करि परिबा ना हाई यील्ड वैरायटी सीड बा हम ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड यूज करि परिबा फ्लड रेजिस्टेंट सीड यूज करि परिबा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रे आईटी यूज करके हमें इन्फॉर्मेशन पाउचे कोन पाउचे एठी ना इन्फॉर्मेशन पाई परुचे हैला दीज आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट वी कैन यूज इनपुट साइड रे एति की रिफॉर्म हमको दरकार इन द सेम वे आ एठी कोन दरकार त प्रोडक्शन होउची एई समय रे हमको दरकार एठी कोन दरकार प्रोडक्शन समय रे हार्वेस्ट समय रे एठी हमको दरकार इंश्योरेंस एठी कोन दरकार हमको ना इंश्योरेंस एठी इरिगेशन मध्य दरकार पेस्ट मैनेजमेंट दरकार हैला आउटपुट रे कोन दरकार ई गोटे थरे बुझंतु एग्रीकल्चर को पूरा गोटे स्लाइड रे एठी बुझौची या पर किछि भी स्कीम आसु बा रिफॉर्म आसु बा एग्रीकल्चर रिलेटेड किछि भी क्वेश्चन आसु तो आंसर कर परिबे एठी देखंतु आउटपुट रे एठी हम कोन मिलुची आउटपुट मिलला पर हम कोन दरकार ना मोस्ट इंपोर्टेंट हैला कि स्टोरेज ताको स्टोर करबा दरकार प्लस क्रॉप लॉस हे गले एठी इंश्योरेंस मध्ये दरकार क्रॉप लॉस हेले बा मार्केट को एक्सेस दरकार एठी बिकिबो कोनल कोठी बिक्री कोठी करियो ये तीनटा हले इंपोर्टेंट आ गोटे पॉइंट एठी रहला क्रेडिट 5 नंबर पॉइंट इनपुट रेट लेखुची क्रेडिट बा लोन फैसिलिटी सो देखो जहां भी स्कीम आसीबो आइदर या पे आसीबो मको भी सॉइल हेल्थ कार्ड गोटे स्कीम जोथि सॉइल रो टोटल न्यूट्रिएंट वैल्यू गुडा से देखै होची फर्टिलाइजर से अनुसार यूज कर हला बा म कहबी फाइनेंस दोची टेक्नोलॉजी पई बा लॉन्ग टर्म लोन दोची पंप सेट किनिया पई सेटा एठी या अंडर आसी क्रेडिट दोची एग्रीकल्चरल क्रेडिट 5 नंबर अंडर आसी हला इंश्योरेंस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कथा एठी कहली पेस्ट मैनेजमेंट पई डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स आसुची हला आउटपुट स्टोरेज पई एठी डिस्कशन हम वर्तमान करूचे सेमती इंश्योरेंस कथा कहली एटा मार्केट एक्सेस रे मार्केट को केमती इजीली पठै परियो मार्केट रे केमती सेल करि परियो फार्मर ये हला एग्रीकल्चर ना टोटलिटी मो लाइफ साइकिल ऊपर डिस्कशन करी दिस इज द टोटल लाइफ साइकिल इन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो वर्तमान फसल बीमा योजना को आसीबा स्पेसिफिकली यार ऑब्जेक्टिव हम जानि परछे कि इट इज अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम प्री सोइंग रो पोस्ट हार्वेस्ट त माने मंजी बुणीबा पूर्वरु आरंभ करी पोस्ट हार्वेस्ट पर्यंत अमल हबा पर पर्यंत ये क्रॉप को फाइनेंस को क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सो बेनिफिशियरी को माने ना ऑल द फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर के भाग चाषी एवं टेनेंट फार्मर ए माने भी एठी इंक्लूड तो एठी कोन इंक्लूड ना एनुअल कमर्शियल एनुअल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ऑयल सीड फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स मिलेट पल्सेस सीरियल्स बुझी परछन समस्त सीरियल धान गहम मिलेट रे आसिला हमर हम कहबी ज बाजरा मांडिया ये सब मिलेट्स आसे पल्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ डाली हरड़ डाली मुग डाली ये सब आसे दे आर आल्सो कवर्ड अंडर दिस स्कीम सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये गोटे ऑप्शनल फॉर द फार्मर्स हु हैव नॉट अवेल्ड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो माने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं है सो ऑल द फार्मर्स हु हैव बोरोड इंस्टीट्यूशनल लोन्स फ्रॉम बैंक्स दे आर कवर्ड अंडर द स्कीम मैंडेटरी जो माने एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एटू क्वेश्चन आसी ए पॉइंट रो क्वेश्चन आसी एटी जो माने लोन नै चंती से माने मैंडेटरली कवर काहे की यदि लोन नै चंती यदि क्रॉप लॉस हे गला मे बी बिकॉज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटी तसे लोन टा रिकवरी केमती हो इंश्योरेंस थिले तो रिकवर हो से कारण पई दैट इज मैंडेटरी फॉर दैट सो एटा बुझिले समस्त फसल बीमा योजना तो ये कौन करछि ना इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करछि फाइनेंशियल सपोर्ट दोछि टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप सो इनकम फार्मर रा इनकम को भी इंश्योर करूछि फार्मर जदि कोन से टाइप रो लोन नै छि ताले एचु से पाई कि तार इंश्योरेंस पाई से लोन टाको रिपेमेंट करि परिबो सो फार्मर सुसाइड मध्ये होबनी फार्मर ऊपर बर्डन मध्ये अधिक पड़िबो सो फार्मर एटी इनोवेटिव एवं मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अडॉप्ट करि परिबो क्रेडिट रहिला जेतु क्रेडिट रहिला बा इंश्योरेंस रहिला फार्मर एटी मॉडर्न प्रैक्टिस स्टार्ट करि परिबो प्रीमियम केते कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पाई 5% खरीफ क्रॉप पाई 2% 1.5% फॉर रबी क्रॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्लाइड वेरी वेरी इंपोर्टेंट एउठी क्वेश्चन आसी एउठी क्वेश्चन आसी लिखि दोती इंपोर्टेंट प्रीमियम केते टंका इंश्योरेंस रे किए देबो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानको पाई 90-10 90% दबो सेंट्रल गवर्नमेंट 10% दबो राज्य सरकार अलगा स्टेट मानको पाई 50-50 केंद्र सरकार आधा राज्य सरकार आ आधा चलो so yeah under the what is covered yeah under को factor coverage प्रथम वाला लोकल नेचुरल कैलामिटी लाइक लैंडस्लाइड
बा हेलस्टॉर्म्स जदि लैंडस्लाइड होची जेमते रिसेंटली केरला रे हेतला calamities leading to loss of yield like flood जदि हला dry spells drought जदि हला pest infestation जदि crop loss कर देला जेमते मझिरे देखिबे locust attack कोटे हला जको हम कोन कहती पंगपाल locust attack हला so crop loss was there that is also covered under this scheme. So losses occurred after investing crops after harvesting crops crop harvestment ପରେ ମଧ୍ୟ ये include करिवो जदि लॉस होउची बिकॉज ऑफ वार और सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी ताहले मध्ये ये इंक्लूड करिवो जदि ये एनमिटी और रायट पई दंगा पई जदि होउची ताहले ये इंक्लूड करिवो कंटामिनेशन जदि होउची न्यूक्लियर रिस्क पई कंटामिनेशन हे गला मालिशियस डैमेज लीडिंग टू यील्ड कार्नेज यील्ड जदि कमी गला बा कंटामिनेशन हे गला एठी कहली एई सब कारण मान करबा एई ग्राउंड रे एठी हमको इंश्योरेंस मिल परिबो बुझी पारले समस्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंडर को कंडीशन एटी मिलुची या अंडर ना अनेक गुडे इनिशिएटिव अछि फर्स्ट इनिशिएटिव कोन डिजी क्लेम सो ऑल द क्लेम्स दे आर वर्कड आउट थ्रू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल का थ्रू रे नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल थ्रू रे हो इंस्टेड ऑफ बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड इट इज पेड टू द फार्मर अकाउंट वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल एटी वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाइ yield estimation system याको yes टेक को है मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन करबो yes टेक मैनुअल कहा रिलेटेड yes टेक मैनुअल कहा रिलेटेड ये क्वेश्चन करबो सो ये डाला कोन yield estimation system डोर टू डोर एनरोलमेंट ऐप जार नाउ छि सहायक ऐप aims to enhance the accessibility of the scheme सहायक ऐप द्वारा यार एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाई दिया जाय पारि एग्रीकल्चरल आउटपुट को ये फोरकास्ट करियो बाय यूजिंग स्पेस और एग्रो मेटीरियोलॉजी लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन यार नाउ जी कोन फसल प्रोजेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करियो फसल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू दे दो क्रॉप यील्ड समस्त देखियो कि फसल प्रोजेक्ट माने नारु लागु क्रॉप यील्ड मार देके आसी क्रॉप यील्ड आंसर कोन यार ना ये फोरकास्ट करछि एग्रीकल्चरल आउटपुट केते आउटपुट आसी को कहा को यूज करी की ना एग्रो मेटीरियोलॉजी माने क्रॉप यील्ड इज द आंसर बट कौन यूज करी की करू से ना दैट इज इंपोर्टेंट तो ये पॉइंट को देखिबे एग्रो मेटीरियोलॉजी अछि कि नै द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट so these are the key initiative जदि हम समराइज करबा को देखिबा दिस इज ऑल अबाउट यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज को टेक्नोलॉजी को आमे यूटिलाइज कले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा संपूर्ण फायदा उठै परिबा एटी डिस्कशन हेछि नेक्स्ट देखिबा हमें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना मोस्ट इंपोर्टेंट कोन कहले प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये कहा ऊपर फोकस करछि पर्टिकुलर स्कीम या हां एटी इंपोर्टेंट को मिनिस्ट्री ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री किए ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एथिरे गोटे इंपोर्टेंट हिस्ट्री कहूँ यार देखो गोटे स्कीम थिला स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान सॉरी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस याको कन्वर्ट कराला कोथरो ना ट्राइबल सब प्लान ये 1977 78 रे आस्ते जेतले प्लान और नॉन प्लान मिसी गला सेतेबेला को कहगला माने एटा को चेंज कर देबा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान केबे 2017 सो ये स्कीम अंडर 23 टा स्टेट इंक्लूड दिले केतना ए स्कीम अंडर 23 टा 23 स्टेट्स दे वर इंक्लूडेड तो यार ऑब्जेक्टिव कोन बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन हमें ऑलरेडी जानि सलेनी जेहेतु मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इट इन्वॉल्व तार विजन कोन समस्त इजीली बुझ पारबे आरो विजन होची टू ट्रांसफॉर्म द विलेज वो विलेज जो विलेज रे सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छा से विलेज को कोदरे ट्रांसफॉर्म करिवो ट्रांसफॉर्म करबा को आइडियल विलेज रे आदर्श ग्राम रे ट्रांसफर करिवो कोदरे ट्रांसफॉर्म करबा को आदर्श ग्राम रो अर्थ होची एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बढ़ायो कोन कहली एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बढ़ायो तुमको सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी कोन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होची से गाँव में रास्ता घाट पानी बिजुली अच्छी कि नहीं शिक्षा स्वास्थ्य सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा स्वास्थ्य अच्छी कि नहीं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ता घाट पानी बिजुली व्यवस्था अच्छी कि नहीं सो ऑब्जेक्टिव कोन ना ऑब्जेक्टिव होची सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कहार सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना जोटी जो विलेज रे ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक अच्छा तो से विलेज रो डेवलपमेंट प्लान करिवो से विलेज रो पोटेंशियल एस्पिरेशन कोन देखिवो
कवरेज बढ़ाइबो फैमिली बेनिफिट स्कीम सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट रा स्कीम अछि तार कवरेज बढ़ाइबो प्रोवाइड करियो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एजुकेशन कनेक्टिविटी बढ़ाइबो रास्ता घाट पानी बिजुली इंक्लूडिंग योर लाइवलीहुड स्वास्थ्य जीविका मध्य ये प्रोवाइड करियो लाइक योर मनरेगा स्कीम रो रिचेबिलिटी को बढ़ाइबो तो ये स्कीम कोन ना एटा गोटे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम centrally sponsored scheme कौन किए को स्टेट कवरेज all the states and all the union territories having notified ST population so total जदि हमें देखिबा 36,428 villages having at least 50% of ST population and 500 ST persons they have been identified for the first phase केबे 2021-22 रु 2025-26 पर्यंत 2021-22 रु 25-26 पर्यंत यार प्रोविजन कोन केते टंका आसीबो ना 20 लाख 20.38 lakh per village that will be provided as gap filling fund पाई केते ना 20 लाख 38,000 टंका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी किए ना एटा इंप्लीमेंट हो थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट तो यार स्कोप कोन ना इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को बढ़ाइयो को इंफ्रास्ट्रक्चर ना हेल्थ बढ़ाइयो न्यूट्रिशन मोबाइल कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ये सब को इंक्रीज करया होचार बेसिक ऑब्जेक्टिव सो कोन इंक्लूड करियो एटी को फैक्टर पे इंक्लूड करियो ना स्किल डेवलपमेंट प्लान बढ़ाइयो विलेज डेवलपमेंट प्लान विथ कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलपमेंट ट्राइबल रीजन गुडा कर फॉरेस्ट डेवलपमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट काई ना लाइवलीहुड को इंक्लूड करियो इंटीग्रेशन ऑफ वन धन प्रोग्राम कंजर्वेशन ऑफ perennial river resources and water bodies originating from the forest to जो perennial rivers चिरस्मृत नदी आछन तार केमति ताकन प्रिजर्व करा जाय परियो रिसोर्स गुडा को जहा छी फॉरेस्ट रिसोर्स हेगला बा अदर रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स केमति कंजर्व करा जाय परियो याको टेक्निकल सपोर्ट मध्ये प्रोवाइड करा जाउची यार डाटाबेस सिस्टम एमआईएस थ्रू रे यार डाटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट होची तले नोडल एजेंसी की कहली ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर चलो ये 4 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम गला तापर हमें नेक्स्ट स्कीम को आसीबा ऑन योर सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 आपको मिशन पोषण 2.0 बोले कह जाउची यार नारू समस्त जानि परथिबे कि ये स्कीम रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन एवं ये स्कीम रो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की ताकू मध्ये समस्त जानि परथि सो आंगनबाड़ी आसिलानी पोषण ना आसिलानी कि हबो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट Ministry of Women and Child Development. So, ये operational guideline बाहर करची for mission Poshan 2.0. 15th Finance Commission. This scheme has been approved by the Government of India for implementation during the 15th Finance Commission period. 15th Finance Commission period टा केबे 2021 रु 25 बा 21-22 रु 25-26. तो ये नार ही लागू ची स्कीम कहाँ रिलेटेड हेतिबो ये स्कीम हेतिबो डेफिनेटली न्यूट्रिशन रिलेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट करिया पई ये स्कीम आस्ती सो दिस इज अ न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम को मानको दबो न्यूट्रिशन सपोर्ट ना चिल्ड्रन एडोलेसेंट गर्ल प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर तो एमान को सब ये वेलनेस एवं इम्यूनिटी प्रोवाइड करियो सक्षम आंगनबाड़ी थ्रू सो जो शॉर्टकमिंग्स अछि ऑनगोइंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में बस मान को जो इंप्रूवमेंट आवश्यकता अछि दैट इंप्रूवमेंट विल बी डन थ्रू दिस पोषण 2.0 So nutrition support पोषण थ्रू रे जाको में सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन प्रोग्राम बोले कहूचे फॉर द चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 6 months to 6 years प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर एडोलेसेंट गर्ल इन द एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट के ना 14 रु 18 वर्ष भीतर जो माने छ 14 रु 18 वर्ष भीतर जो माने छ कोडी इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कोडी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रे और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को हम इकोनॉमिक्स क्लास कवर करछि वन शॉट सीरीज अवेलेबल अछि प्लेलिस्ट रे समस्त देख परिबे ये YouTube चैनल अवेलेबल अछि प्लेलिस्ट जाय कि समस्त देख परिबे सो अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन केते ना 3 रु 6 ईयर पर्यंत अर्ली स्टिमुलेशन फॉर 0 to 3 years आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पढाइबो ताको मॉडर्न करिवो अपग्रेड करिवो थ्रू पोषण अभियान ये उतार बेसिक ऑब्जेक्टिव सो यार आउ ऑब्जेक्टिव कोन ना माल न्यूट्रिशन को चैलेंज करियो माल न्यूट्रिशन को कम करियो न्यूट्रिशन अवेयरनेस बढ़ेवा ईटिंग हैबिट बढ़ेवा सस्टेनेबल हेल्थ एवं वेलबीइंग पाए सो ये बेसिकली को मान को ऊपर फोकस कला ना मैटरनल न्यूट्रिशन को यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स को बा वेलबीइंग को सो दिस इज द ये बेसिकली को मान को करछ फोकस ताले ना ये वल्नरेबल सेक्शन को करछ टू द वल्नरेबल सेक्शन लाइक दैट नेक्स्ट को जिबा हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
ये तो नुआ स्कीम नुहे आप समस्त सुनिथिबे ये 2015 रे आस्थिला ये स्कीम सो ये करेंटली न्यूज रे काहे के अछि ना यार 9 ईयर सेलिब्रेशन हला रिसेंट 9 ईयर सेलिब्रेशन हला रिसेंटली सो दैट इज व्हाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिस इज इन न्यूज सो ये कौन चाहूँ कहीं आसला ना सेक्स रेशियो एट बर्थ बढ़िया सेक्स रेशियो माने 1000 मेल रे केतेटा फीमेल अछि सेटा सेक्स रेशियो ताको इंक्रीज करिया पई प्रत्येक वर्ष बाय 2 पॉइंट इंक्रीज करियो बर्तमान मु कहबी केते पिला और केते अछि सो इंप्रूवमेंट कोथरे ना परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी माने मेडिकल डिलीवरी हो पूर्व जोटा घरे कर दोतिले ऑन इंस्टीट्यूशनल वे सो ये रेट को इंक्रीज करू 95% और अबव First trimester antenatal care registration for your 1% increase in hobo. 1% increase in enrollment at secondary education level. Dropout rate को कम करिवा. Plus menstrual hygiene management करिवा. ये सब होची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रो basic objective. These are the basic objective of this particular scheme. So ये स्कीम आस्तिला मु ऑलरेडी कहली 22 जनवरी 2015 कोडी हितला ना पानीपत हरियाणा रहते पानीपत हरियाणा रही 2011 सेंसस अनुसार यदि हमें देखिबा चाइल्ड सेक्स रेशियो एक्सटेंसिवली डिक्लाइन करछि 1000 बॉय रे एटा केते 918 so 13 out of 35 states and union territories they have low CSR than the national average ru 13 टा state और union territory रे कम अछि sex ratio child sex ratio. So the government of India selected 100 districts on the basis of low child sex ratio as per census 2011. So pilot basis रे गोटे स्टेट रू at least one district नेकी child sex ratio को improve करिया पई देखा गला मोटी क्यूडालोर डिस्ट्रिक्ट रो कथा डिस्कशन करछि तमिलनाडु याकू इंप्लीमेंटेशन पई फर्स्ट डिस्कशन फर्स्ट निया गला काहे कि एटी चाइल्ड सेक्स रेशियो लोएस्ट पिला इन दिस स्टेट तो तमिलनाडु रो चाइल्ड सेक्स रेशियो केते ना 943 नेशनल एवरेज होची 918 बट तमिलनाडु रो होची 943 इन ऊपर 1000 एटी देखो 2001 रो सेंसस एटी नीचे एटी सेंसस 2011 रो डाटा नीचे इंडिया रे केते एटी थले ना 927 एटी ला 918 कमिला केते पॉइंट कमिला डिक्रीज ऑफ डिक्रीज केतेटा पॉइंट डिक्रीज हला एटी 729 टा पॉइंट 9 पॉइंट डिक्रीज तमिलनाडु 942 थिला 13 ताने गोटे पॉइंट इंक्रीज कुडालोर 957 थिला देखो एटी 896 957 नु 896 61 पॉइंट डिक्रीज हे जेछि केते 61 पॉइंट डिक्रीज 61 पॉइंट डिक्रीज हला ओके सो ये स्कीम रो ऑब्जेक्टिव ताल कोन जेंडर बायस सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन कम करियो बाजे बडा को इन्फेंटिसाइड होची फीमेल फर्टिसाइड होची फीमेल इन्फेंटिसाइड होची ताको रिड्यूस करियो गर्ल चाइल्ड रो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करियो ताको तार सर्वाइवल रेट को केमदी बढ़ेइबो से विषय डिस्कशन करछु एजुकेशन एवं एजुकेशन ने गर्ल चाइल्ड केमदी पार्टिसिपेट करियो बा ड्रॉप आउट रेट कम होबो से कथा को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते यार चेयरपर्सन फॉर इंप्लीमेंटेशन इंपोर्टेंट पॉइंट एटा मन रखियो तले ये स्कीम रा अचीवमेंट कोन 2015 रो हेला 2015 रे क्यूडालोर रे थिला 886 वर्तमान 895 2016 रे गोटे वर्ष ड्रॉप आउट रेट डिक्रीज है 1.5% 2015 रे 2016 को एटा 1% को डिक्रीज है 1.5 टू 1% डिक्रीज सेकेंडरी स्कूल रे ड्रॉप आउट रेट थिला 3.26 रिड्यूस है 1.5% then Sukanya Samriddhi Yojana under जदि हम देखिए approximately 60,000 children they have their account. So infrastructural development like residential school है toilet water facility पढ़ी installation of different type of toilets एवढा toilet install है कोठी girls school मान करे for the girls students. So this is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ this is for हमें कहि परिबा to increase the child sex ratio. Then the next one is Mission Shakti, बहुत फेमस स्कीम आपको समस्त सुनिथिबा एटलीस्ट कोटना कोडी मिशन शक्ति ना देखिबे रास्ता घाट रे होर्डिंग ले देखिबे बा बाली यात्रा रे कोनोसी मेला रे देखिबे मिशन शक्ति ऊपर आर ऑब्जेक्टिव कोन शक्ति रो नाम हो जानि परछ हम ये एम्पावरमेंट करूछ कोन करछि ना एम्पावरमेंट करूछ सो ये वुमेन सेफ्टी बढ़ौछि वुमेन सिक्योरिटी बढ़ौछि और एम्पावरमेंट बढ़ौछि
सो ये गवर्नमेंट रो कमिटमेंट देखौची वुमेन लेड डेवलपमेंट करिया वुमेन लेड डेवलपमेंट करिया पे देखौची सो मिशन शक्ति अंडर दीटा सब स्कीम अछि कोन ना गोटेला संबल आ गोटेला सामर्थ्य के गोटेला संबल आ गोटेला सामर्थ्य संबल स्कीम फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन सो देयर आर डिफरेंट स्कीम्स लाइक वन स्टॉप सेंटर वुमेन हेल्पलाइन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब गुडा को या अंडर आ जाउछ सो मिशन शक्ति रो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कहली कि जो माने वुमेन एवं गर्ल इंक्लूडिंग डिफरेंटली एबल्ड सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनल सेक्शन जो माने वल्नरेबल ग्रुप जो माने सेमान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछ सो या अंडर रे दीटा आसिला गोटेला संबल आ गोटेला सामर्थ्य गोटे पर गोटे हम डिस्कशन करिया एथिर कोन होछ ए मिशन शक्ति व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन शक्ति फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इमरजेंसी इमीडिएट सर्विस शॉर्ट टर्म केयर ये प्रोवाइड करियो शॉर्ट टर्म केयर प्रोवाइड करियो 24 आवर हेल्पलाइन नेशनल टोल फ्री नंबर रे करि परियो फॉर कोन पई टेम्पररी शेल्टर पई लीगल एड पई साइको सोशल काउंसलिंग पई करि परियो देन इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन पई करि परियो बा फिजिकल फाइनेंशियल सोशियोलॉजिकल स्टेटस जो मानकर डिग्रेड हेछि बा ताको अपलोड करिया पई रिफॉर्म करिया पई यूज करि परियो बिहेवियर चेंज communication for dignity and prevention of crime and violence against women against violence को reduce करिया उचार another objective so संबल scheme under रे किछटा important point ऊपर डिस्कशन करिया कोन आसुछि ना इट इंक्लूड्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जहा को डिस्कशन करली बर्तमान वन स्टॉप सेंटर एंड नारी अदालत कोन कहली नारी अदालत और वन स्टॉप सेंटर रो ऑब्जेक्टिव कोन ना ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड साइको सोशल एवं लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड करूछ जो माने दोज वुमेन हु आर अंडर स्ट्रेस दोज हु आर फेसिंग मेंटल हैरेसमेंट ये जो माने डिस्ट्रेस रो अछंती वन स्टॉप सेंटर को माने को पई ना से माने को पई नारी अदालत को माने को पई ना वुमेन माने को पई दिस इज लाइक अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सो जो गुडा को हरासमेंट रिलेटेड टाइप ऑफ क्राइम अछि सेति अछि नारी अदालत ताको सॉल्व करिया वुमेन हेल्पलाइन 24 आवर रो वुमेन हेल्पलाइन प्रोवाइड करा जो माने इमरजेंसी सिचुएशन अच्छा देन सामर्थ्य कोन इंक्लूड करछ ना ये करछ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सखी निवास अंगनवाड़ी कम क्रेज पालना हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये सब हम गोटे पर गोटे डिस्कस करिया मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट सखी निवास इट इज अ सिक्योर प्लेस कोन पई फॉर द स्टे ऑफ वर्किंग वुमेन जो माने वर्किंग वुमेन से मानकर स्टे पई बा से माने रहया पई ये इंपोर्टेंट स्कीम अछि देन आउ कोन अछि ना जो वर्तमान गोटे एक्जिस्टिंग स्कीम अछि वर्किंग वुमेन हॉस्टल कोन कहली जो माने वर्किंग लेडी से माने रहया पई हॉस्टल अछि सेफ्टी प्रोवाइड करिया पई से माने को हॉस्टल अछि ताकू रिनेम करा जाउछि कोथरे ना सखी निवास कोथरे रिनेम करा जाउछि ताकू ना सखी निवास बुझिला सो एठी को माने ना सिंगल वुमेन जो मानकर जो वुमेन मानकर फैमिली मेंबर तांको सहित रहू नांदी बा गर्ल्स दोज हु आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन बा जो माने ट्रेनिंग नउछन से माने एठी रहि पारि 50 टा नुवा हॉस्टल क्रिएट हिची ऑपरेशनलाइज्ड हो अंडर दिस मिशन ये मिशन अंडर 50 न्यू हॉस्टल्स टू बी ऑपरेशनलाइज्ड देन द नेक्स्ट इज पालना स्कीम मोस्ट इंपोर्टेंट आरी अंडर अछि एटा कोन ना ये क्रेज फैसिलिटी प्रोवाइड करछि को मानको पई ना वर्किंग वुमेन मानको पई वर्किंग वुमेन मानकर जो माने जदी छोटो बेबी अछि छोटो छुआ अछि चिल्ड्रन तब से कोड रखि जिवे काम तो एम्पावरमेंट ही पर वुमेन मानकर कोन पई ना ए ग्राउंड रे कि से मानको छोटो पिल्लार ध्यान रखिया पई ताके केयर न पई कि लोक ना सो पालना स्कीम कैटर करछि एटा पालना स्कीम द्वारा से माने क्रेच रे सेफ क्रेच रे से मानको पिल्ला को छाडी काम को जाय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यार ऑब्जेक्टिव कोन जो माने प्रेगनेंसी एवं चाइल्ड बर्थ पई जो मानकर वेज लॉस होछि ये से मानको पई अछि So basically it provides or contribute a better care for the pregnant woman or to the lactating mother to the newborn जो माने कर नवजात शिशु अछि से मानक मध्य सो इतरे केवल वन चाइल्ड पूर्व कवर करा जाउतला वर्तमान सेकंड चाइल्ड को मध्य कवर करा जाउछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही आसी क्वेश्चन पूर्व वन चाइल्ड कवर होतला एबे सेकंड चाइल्ड को मध्य एटी इंक्लूड करा जाउछ देन नेशनल हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बा स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन district hub for empowerment of women 3-tier structure national level state level district level kon pai now for drilling down effective delivery implementation monitoring and feedback for all components of mission shakti convergence of all schemes
सब स्कीम रो कन्वर्जेंस इनिशिएटिव्स फॉर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिसर्च पब्लिकेशन रिलेटेड टू जेंडर बजेटिंग गैप फंडिंग फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट पाई गैप फंडिंग हैला देन नेक्स्ट हम देखियो शक्ति सदन ये सब गुडा कई गोटिए स्कीम अंडर आसुची सब गुडा के एट टाइम मन रखिबे all are related to women empowerment in different approach शक्ति सदन ऑब्जेक्टिव वन ये प्रोवाइड करछि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एवं एम्पावरमेंट को मान को ना वुमेन दोज हु आर फेसिंग डेस्टिट्यूशन जो माने डेस्टिट्यूट वुमेन जहर कई नाहंती डेस्टिट्यूट समान को ये सपोर्ट प्रोवाइड करछि रिकवरी रिहैबिलिटेशन रिपैट्रिएशन रीइंटीग्रेशन टू द सोसाइटी ये होता है बेसिक ऑब्जेक्टिव ये गला मिशन शक्ति एवं सेतरे थिबा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट मानक ऊपर एथरा में कोन सिकिल दिस इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट come to the next one skill india program recently skill india program completed 8 years purpose कोन ना ये स्किल बढ़ेबो स्किलिंग करिवो रीस्किलिंग करिवो अपस्किल करिवो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम फाइनेंस के दबो ना इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन कार मिनिस्ट्री कोन मिशन डायरेक्टरेट जो स्किल डेवलपमेंट by मिशन डायरेक्टरेट अछि सो दैट इज द मॉनिटरिंग एजेंसी सो इट हला स्किल इंडिया प्रोग्राम जहार ऑब्जेक्टिव कोन ना स्किल डेवलपमेंट बर्तन प्रॉब्लम इज नॉट एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट जब देखिए डेली बेसिस पे देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज़ पब्लिकेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ बहुत आछ बट as per the requirement employee पाखर जते स्किल नहीं सो देयर इज अ गैप ऑफ स्किल रिलेटेड गैप एट स्किल गैप को मिनिमाइज करिया पई अपस्किल करिया पई रीस्किल करिया पई ये प्रोग्राम आसुची कोन ना स्किल इंडिया प्रोग्राम कोन कहते ताको स्किल इंडिया प्रोग्राम सो ऑलरेडी कहली ऑब्जेक्टिव कोन ना गैप बिटवीन स्किल रिक्वायर्ड एंड द स्किल पोजेस्ड एम्प्लॉय मान का जहा स्किल दरकार एवं जहा स्किल अछि तिरे गैप मिनिमाइज करिया पई पॉवर्टी रिडक्शन पई कॉम्पिटिटिवनेस बढ़िया पई स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करिया पई इंडियन मान को वर्ल्ड वाइड बा ह्यूमन रिसोर्स ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स रे परिणत करिया पई फॉरेन वर्क करिया पई एक्जिस्टेंस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़िया पई एक्चुअल कॉम्पिटेंसी बढ़िया पई जो मान को पाखरे स्किल नाही अपॉर्चुनिटी लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिया पई इनकम ऑगमेंट करिया पई ये सब उतर बेसिक ऑब्जेक्टिव दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करूची कोन कहली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करूची so the parliamentary standing committee on rural development and panchayat raj it released its report on pradhan mantri gramin sadak yojana purpose कोन ना रूरल कनेक्टिविटी बढ़े ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रूरल कनेक्टिविटी बढ़े there is a fund sharing mechanism between the center and the state 90:10 for the 8 northeastern states 3 himalayan states and other state मानक पई 60-40 ratio important other state by 60-40 northeastern state और himalayan state by this is 90-10 ऑब्जेक्टिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड करिवो ऑल वेदर रोड माने प्रत्येक समय ऑल वेदर रोड माने वर्ष सारा सब समय जेमति रोड प्रोवाइड करि पाए तो तार बेसिक ऑब्जेक्टिव देन माहिर बा मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंपोर्टेंट वो मिनिस्ट्री लॉन्च करूची एटा जानिबा दरकार सो यार ऑब्जेक्टिव कोन पावर सेक्टर रे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करबा होची यार ऑब्जेक्टिव कोन कहली पावर सेक्टर रे इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी को यूज करबा होची यार ऑब्जेक्टिव हला ए गोटे पॉइंट मन रखबे को मिनिस्ट्री आनिची और तार ऑब्जेक्टिव कोन एति सो ऑब्जेक्टिव हला ऑलरेडी कहली कि ग्लोबल पावर सेक्टर रे इंडिया को मिसिया पई इंडिया को अपलिफ्ट करिया पई पावर सेक्टर कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिया पई पावर सेक्टर स्टेक होल्डर फॉर कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सिनर्जेटिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी द्वारा पायलट प्रोजेक्ट आनिया पई सो साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिया पई इन पावर सेक्टर पावर सिस्टम डेवलप पावर सिस्टम करिवा as compared to other leading countries these are the basic objectives so को सेक्टर रे इट रिसर्च हबो ना लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कुकर ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर जियोथर्मल एनर्जी सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन नैनो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी then indigenous CRGO technology these are the field of research a field operating research करा then now the next scheme को आसीबा survey of
villages abadi and mapping with improvised technology in village areas. आबादी जमी जो गुड़ाक ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज को आनी सो ये इंटीग्रेटेड इनहाबिटेड प्रॉपर्टी जो गुड़ाक सार ओनरशिप सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करछि कोठी ना इन द रूरल एरिया रे तार ओनरशिप सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करछि गोटे पॉइंट ही मन रखियो आ कि दरकार नै एवं को मिनिस्ट्री आपको इंप्लीमेंट करछि एतिक मन रख नेक्स्ट वन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 तो यार ऑब्जेक्टिव करना 75 लाख एलपीजी कनेक्शन दबो नेक्स्ट 3 ईयर 2023-24 रु 25-24 पर्यंत सो डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन को मान को ना लो इनकम फैमिली मान को प्रोवाइड करा छै कि आनि छै मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंपोर्टेंट नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी कि आनि छै कर्मयोगी मिशन ना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन now civil service examination जदि हम देखिबा it creates your bureaucrats for the future generation they are the permanent executives गवर्नमेंट रो तीनटा ब्रांच अछि समस्त जानिथिबे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एवं जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव को दुई भाग रे डिवाइड करा जाय परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव परमानेंट हले जो माने ब्यूरोक्रेट टेम्पररी हले जो माने पॉलिटिशियन मिनिस्टर होजन so civil service this is the center of all government activities they are the policy makers they are the executive branch of government so semanakara crucial responsibility को increase करियो semanakara crucial responsibility कोन crucial responsibility होची development of the country development of the nation तो semanakara capacity building करियो होची basic objective as the name suggests यदि हम इंडिया एट 75 रिपोर्ट देखिबा नीति आयोग रो ये हाईलाइट करूची नीड फॉर अ रिफॉर्म इन ट्रेनिंग रे रिफॉर्म पाइए कहूची सो इट एक्सपीरियंस गेन्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक रे ये समय जदि हम देखिबा कोन आवश्यक थिला हमर ना bureaucratic function that should be more and more dynamic because we don't know what is going to happen at what point of time future is quite uncertain एही कारण जदि हम देखिया bureaucratic response covid-19 pandemic समय रे हमको extraordinary response रा आवश्यकता थिला and we felt that as per the report as per Niti Aayog report so there is a national program for civil service capacity building it has 6 pillars policy framework institutional framework competency framework digital learning framework then your electronic human resource management and monitoring and evaluation framework ये छोटा program बा छोटा pillar अच्छी अंडर so it covers all the civil servants contractual employee मान को मध्य ये include करूची across different ministries all right ठीक है नेक्स्ट पॉइंट को आसला उड़ान स्कीम ये स्कीम रो ना समस्त सुनिथिबे उड़ान उड़े देश की आम नागरिक कोन कहली उड़ान स्कीम उड़े देश की आम नागरिक सो सीएसजी तंकर ऑडिट रिपोर्ट देले ऑन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान सिद्धि पई दिस इज व्हाई इट इज इन न्यूज़ ए कारण एटा न्यूज़ रे अछि सो उड़ान स्कीम आसिला परे कोन कोन चेंजेस हेछि उड़ान स्कीम परे हमको चेंजेस कोन देखिया पड़छि नार होई जानि पड़छि उड़ान फॉर the armed नागरिक means for the ordinary citizen तामाने ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को यूज करियो बा सिविल एविएशन सर्विस को ये यूज करियो यदि हम देखिबा 2013 रे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज कंडक्टेड अ डिटेल स्टडी ऑन एयर ट्रांसपोर्ट ये कहला कि कनेक्टिविटी इज लिमिटेड among the big cities of the country so 2015-16 रे यदि हम देखिबा 65% connectivity was there and 61% air traffic that is focused between 6 important cities only तामाने रेस्ट ऑफ द शहर को कोनस प्रकार एयर कनेक्टिविटी नथिला वर्तमान जदि हम देखिबा कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जायछि जोटा 6टा मेट्रो सिटी को केवल इंक्लूड करथला एबे रेस्ट ऑफ द सिटी मान को ये इंक्लूड कर दैछि जोटा मीडियम सिटी बा जोटा स्मॉल सिटी ताको कवर करछि एयर ट्रैफिक इंक्रीज हेछि कोन कहले एयर ट्रैफिक इंक्रीज हेछि कॉस्ट ऑफ एयरलाइंस से मध्य डिक्रीज हेछि कॉस्ट ऑफ एयरलाइंस माने जे समस्त अफोर्ड करि परिबे अफोर्डेबल एयर फेयर फॉर एवरीवन समस्त देई परिबे सेटा इंक्रीज हेछि उड़ान स्कीम रो तीनटा बेसिक एडवांटेज अछि कोन ना बिजनेस इंक्रीज हेइ परबो बिजनेस बढ़ी परिबो काई कि माने इजीली कम्युनिकेशन पाई कारण टूरिज्म बढ़िबो गोटे जगह आ गोटे जगह ट्रांसपोर्टेशन पाई एवं एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो
These are the three advantages of the scheme. The next is National Food Security Act. National Food Security Act 2013 by which ministry? Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So food security objective kono na tinita point hochar objective: accessibility, affordability and availability. Padi chame aap accessibility, affordability and availability. So जोटा हम देखते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, this is a key initiative under National Food Security Act. इटा 5 वर्ष पई पुनी एक्सटेंड हेगला 2024 रु एटा 5 वर्ष पई पुनी इंक्रीज है. ऑब्जेक्टिव कोन ना फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया. फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया होचार बेसिक ऑब्जेक्ट. बेनिफिट को माने पाइबे ना सब्सिडाइज राइस पाइबे 3 टंका रे, व्हीट पाइबे 2 टंका रे, क्वार्ट्स ग्रेन पाइबे टंका टा पर केजी. हैला एको को जाय सेंट्रल इश्यू प्राइस. को माने पाइबे ना प्राइमरी हाउसहोल्ड पाइबे, अंत्योदय अन्न योजना हाउसहोल्ड जो माने से माने पाइबे. प्राइमरी हाउसहोल्ड को मिलियो 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ. अंत्योदय अन्न योजना हाउसहोल्ड जो माने से माने को मिलियो 35 kg फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ. पर फैमिली पर मंथ प्लस अंत्योदय हाउसहोल्ड जो माने से माने को 1 kg सुगर मिलियो पर फैमिली पर मंथ थ्रू द TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये गला तार बेसिक ऑब्जेक्टिव. सो बहुत इंपोर्टेंट स्कीम ऊपर हमें डिस्कशन कले. वर्तमान में आस्थिबा लास्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को, टॉपिक नंबर 5, योर पिक्चर ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया. इकोनॉमिक डिवाइड को ग्राउंड रे ना ऑन द बेसिस ऑफ योर रेट ऑफ डेवलपमेंट पाठ्य में इंबैलेंस ऊपर डिस्कशन करियो. सो ये कोची देयर इज अ पेपर पब्लिश्ड known as relative economic performance of Indian states 1960-61 to 2023-24. So ये गोटे गैप देखौची. एटी कोन कहली रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स. इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का ना इंडियन स्टेट मानकर को समय रो 1960-61 2023-24 पर्यंत ये गैप देखौची कहां भीतर. इट्स लीडिंग टू ए क्वेश्चनिंग ऑफ फेडरलिज्म. सो ये सितंबर मास रे एटा आसीतिला. इट वाज रिलीज्ड by Economic Advisory Council to the Prime Minister. This released this paper, Relative Economic Performance of Indian States. So ये कौन देखौची हमको ना, it shows the share of each state in the country's income and the per capita income compared to the all India average. All India average को कौन कहले, all India average को ये गोटे स्टेट रो कंट्रीब्यूशन केते ये तापर डिस्कशन करूची. सो ये डाटा हमको बेसिकली देखौची एवरेज वेलफेयर केते, गोटे स्टेट रो कंट्रीब्यूशन केते, और इनडायरेक्टली वी कैन से इट शोज अस द इनइक्वालिटी, रेट ऑफ इनइक्वालिटी केते. माने कर गोटे स्टेट रैपिडली ग्रो करूची, आ गोटे स्टेट स्लोली ग्रो करूची. कोन कहली आ गोटे स्टेट स्लोली ग्रो करूची, देन डेफिनेटली इट विल लीड टू इनइक्वालिटी. बाय कंडीशन को हमें कोन कहबे, ये कंडीशन को हमें इनइक्वालिटी बोली कहि परिबा. एग्जांपल एटी नि आइ तो महाराष्ट्र. महाराष्ट्र होची हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द नेशंस इकोनॉमी. So यार per capita income केते ना, per capita income होची 150% of the national average है ना. बट महाराष्ट्र रे प्रॉब्लम कोन एटी देखौस देखन तो एटी मुंबई अछि. मुंबई इज वेरी रिच समस्त जानि छथि, एवं एटी विदर्भ रीजन अछि व्हिच इज फेमस इनफेमस फॉर फार्मर सोसाइटी ड्यू टू पॉवर्टी. सो मुंबई इज द रिच रीजन. ये कंट्रीब्यूट करछि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स. बा म्युनिसिपैलिटी होछि रिचेस्ट म्युनिसिपैलिटी इन द कंट्री. Mumbai is the richest municipality in the country, and simultaneously it huge slums ach, uncivilized living condition ach. Kon kahili uncivilized living condition ach. So it has a huge slums with uncivilized living conditions. So एटी हमको regional difference देखिया पाई मिलुची. This report points out to the consistently better performance of the western and southern regions of India and the weak performance of the eastern states. Eastern state including Odisha एटी weak performance हमको देखिया मिलुची. Southern state, western states एमान कर their performance is quite good. This is the geographical analysis of economic development in India. So northern states they have done poorly with the exception of Haryana and Delhi. So जदि हम देखिबा overall condition state रो condition कोन, and this is not for a good federal system. फेडरलिज्म रे हम देखछे दीटा सरकार, केंद्र रे केंद्र सरकार, राज्य रे राज्य सरकार, एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार भीतर थिबा रिलेशन को एटी फेडरलिज्म कहल जाउछ. एंड बेटर फेडरलिज्म इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल. नाउ एटी प्रॉब्लम कोन, किछि स्टेट्स दे आर ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट
and some other states they are going at a slow rate. So it will create conflict between the fastest growing economy and the slowest growing economy. So it's a growing gap that leads to questioning of federalism. So there are representatives of richer states. Recently, they held a conclave in Kerala and they argued that they are not receiving their fair share of resources from the center. So they say that they contribute much more to the national, much more to the national average or to the total entire national income as compared to the other states. So 2000 ମସିହାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା there was a conclave of successful states to protest the devolution by 11th Finance Commission. So slowly the spirit of federalism is weakening. यार अर्थ सिंपल भाषा रे बुझा सेंटर स्टेट रो फेडरलिज्म एटी तो केवल गवर्नेंस कथा में डिस्कशन करना. दिस इज आल्सो ऑल अबाउट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फेडरलिज्म. ना स्टेट को सेंटर पाके थिबा टैक्स रो केते परसेंट आसीबो डेवोल्यूशन हो एटा जेमति डिवाइड केमति ना बाय द फाइनेंस कमिशन. सो ये कहते किसी स्टेट कहते आमर तो शेयर टू द टोटल जीडीपी इज मैक्सिमम. टोटल जीडीपी के हम शेयर देबो अधिक. बर्तमान को स्टेट नेबे तार बेनिफिट उठाइबे ना जो गुडाक स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. जो गुडाक स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तार बेनिफिट नेबे. सेमानकर कंट्रीब्यूशन कम सेमाने नेबे अधिक स्टेट बा कंट्री सेंटर. आमर कंट्रीब्यूशन अधिक व्हेयरएज आमे नेबो कम. सो दिस इज अ वायोलेशन ऑफ आवर राइट्स और दिस इज इनइक्वल ट्रीटमेंट. So ये जो report list liberalization 1991 LPG model asla, and this LPG model is the marker of when the southern states began to perform better. So it is जब कारण देखिबा ये कारण ऊपर के जो डिस्कशन करना बाकी जो coastal state जब हमें देखिबा like Odisha in the eastern states it is also doing better. Now what could be the poorer performance of some states linked to the better performance of some others? किसी स्टेट रो बेटर परफॉर्मेंस आउ किसी स्टेट रो पुअर परफॉर्मेंस सहित केमति रिलेटेड. मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर किए ना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट. सो एट जदि एम्प्लॉयमेंट बा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अधिक बुझा चेष्टा करंतु. जदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोटे स्टेट रे अधिक ता माने सेठी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नाही. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट केते बेले हबो जेतबे व्हेन देयर इज अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. जदि इंफ्रास्ट्रक्चर अछि जदि इंफ्रास्ट्रक्चर नाही ताले ठी बेटर डेवलपमेंट ही परिबो नै. सो देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. Now lack of infrastructure कौन पाइना because of lack of investment. Investment किए करियो? Investment by the private sector. Now private sector they have a biased tendency to go towards certain states. किछि स्टेट रे से माने जिवे किछि स्टेट रे से माने अधिक और अधिक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करियो अदर स्टेट रे करिवे. सो एठी हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जोटा हमको दरकार which is required for the larger economy or for the more development, for more output, for more production, for more addition to the total GDP. से फैक्टर गुडा काम केटी कमी जाउछ. तो इन्वेस्टमेंट कोट आसे ना पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आसे. सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिपेंड करियो पॉलिसी डिसीजन ऊपर एवं प्राइवेट सेक्टर टा डिपेंड करियो कहा पर इट विल डिटरमाइंड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी कंसीडरेशन. ये कहां पर ना प्रॉफिटेबिलिटी. हमें इन्वेस्टमेंट टा पब्लिक रे करियो ना प्राइवेट रे करियो या की निर्धारण करियो. पब्लिक रे करियो कि नहीं पॉलिसी डिसाइड करियो. प्राइवेट रे करियो कि नहीं के डिसाइड करियो ना केते रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलुछ. जत्ते अधिक इंटरेस्ट मिलु सेते अधिक इन्वेस्टमेंट हो. So government it invest करियो कोडी ना in the backward areas to develop it even if no profit accrues in the short run. एवं private sector will not do because its basic objective is profit maximization. बहुत important topic ये आपको समस्त लिखी के रखिए जहां लिखा है तो कॉपी पेस्ट कर रखिए. You can use it in your answer sheet. So private investment goes to developed areas where a large market ensures profit. So urban conglomerates like Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad they are preferred as the better investment destinations. So coastal regions are preferred because cheaper access to external market through the export. Port use kari like Odisha katha kaibi, Bengal katha kaibi, jodi port facility achi. Now infrastructural availability and quality of good governance in the state, that is also important. जदि आम देखा जम्मू कश्मीर रे इन्वेस्टमेंट कम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, लैक ऑफ सिक्योरिटी. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन, कम्युनल वायलेंस. बट सम स्टेट जो हमको गवर्नेंस बेटर देखा मिले से इन्वेस्टमेंट बेटर देखा मिले. सो रिच स्टेट्स दे आर बेटर इन बोथ and they attract more investment. Rich state ro quality of governance is good, infrastructure is good. Infrastructure माने रास्ता घाट, पानी, बिजुली, इलेक्ट्रिसिटी ये सब ऑलरेडी अवेलेबल अछि. सेतमै से माने अधिक रो अधिक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करि परछन हैना. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. So private investment is 75% of the total investment. After launch of new economic policy बाजा को हमें 1991 LPG मॉडल पहुंचे, public sector रो रोल
as the leading sector, it is shifted to the market पाखर अधिक रोल रोची, private sector पाखर अधिक रोल रोची, ताकि मैं LPG class रे already पढ़ाई छी. So more investment has been going to the richer states where profits are higher. সেই স্টেট কু ଯିବ ଯୋଉଠି ଅଧିକ profit ମିଳିବ. So the considerable household savings increasingly got diverted from the poor state to the rich state. So poor states, they have a large share of unorganized sectors working at low productivity and low income. So under this new economic policy, it has favored the organized sector. It has been aided by construction of freight corridors, highways, which it enables better performance or better penetration or better your I can say better infrastructural facilities, leading to development of your good connectivity. But connection বা আমি যদি কইবা communication transportation को ये strengthen करूची हैला. So NEP played a very major role to create division across the states काहे the liberalization as the liberalization ଯେତେବେଳେ ହେଲା liberalization ଏଠି division create कला. So West Bengal और Kerala होतन special case. ये दीटा जाका state रे they have had strong left movements and labor militancy. So the private sector has invested little in these states. So the border states of India, they have received less public investment for strategic reason. So insurgency होतिबा कारण मु already कहली north eastern state रे कम investment, Jammu Kashmir रे कम investment, but private investment किछि state रे कम मिला, कोटा केरला West Bengal काहे ना माने more inclined towards leftist. So opposition ruled states, they have accused the center of playing politics with public investment. So जो डबल इंजन की सरकार कुआ जाउची या पर मध्य अनेक गुडे डिबेट चलिला. So growing cronyism means crony capitalism जहाँ कुआ जाउची more concentration of capital to certain regions in India, it impacts investment decisions. Basically these are political signals, politically एगुडा सब interfere करवा द्वारा investment सही region नहीं होउची. And black economy, this is also proportionately more in the poor states. Black economy जदि हमें देखिए avoidance of tax एगुडा सब बंद poor state रे अधिक रो अधिक. So investment climate ऊपर मध्य ये impact पकोची. It reduces the growth potential. Now how it is a threat to federalism? Already we discussed कली. Now we discussed about LPG model, तार negative impact on. Or here we are talking about inequality among different states on different grounds. Now it is how it is a threat to federalism. Already कहली कि किछि स्टेट ग्रो करछन एटा फास्टेस्ट रेट, किछि स्टेट ग्रो करि पारु ना. बट शेयर जदि हम देखिबा सेंट्रल गवर्नमेंट टू एड पाउछन सब स्टेट इक्वली. नाउ इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. जो स्टेट मानकर कंट्रीब्यूशन मोर टू जीडीपी, दे हैव अ कंप्लेनिंग कैरेक्टर, कंप्लेनिंग एटीट्यूड कि व्हाई the states those who are contributing less to the national GDP, they will receive more. So for this reason there is a threat to federalism. Then last line, the organized sector which is constrained by shortage of demand would also benefit. More concessions from the government are not what they need, since they have enough resource to increase their investment. So these policy changes will not mean that the richer states would not grow, only disparities would decline. So this would be development from the below, which would strengthen federalism as well as nation's unity. Now federalism is important to be protected because it protects the unity. ये कौन खाली इनइक्वालिटी को रिड्यूस करिवनी एसकी, ये इनइक्वालिटी को तो रिड्यूस करिव, फेडरलिज्म को तो स्ट्रेंथन करिव. ता सहित जोडा डेवलप स्टेट से माने भी डेवलप है, से मान को डेवलपमेंट रे इट विल नॉट एक्ट एज एन हिंड्रेंस. ये हिंड्रेंस हिसाब रे काम करिव. से मान को डेवलपमेंट से डेवलपमेंट रास्ता रे जीवो, प्लस इनइक्वालिटी रिड्यूस होबो, एवं जोडा सब स्टेट अछन को स्टेट अंडर डेवलप्ड स्टेट गुडा को मध्य ग्रेजुअली ताकर इंक्रीज हेबे बा से माने मध्य डेवलप है. So this is all about this topic. So most important topic ऊपर आज हम डिस्कशन कले on women empowerment. Women empowerment ऊपर डिस्कशन कले केमती ना by use of energy, co-energy, solar energy. Then second topic discuss कले on women empowerment judiciary रे. फेडरलिज्म ऊपर आज गोटे टॉपिक डिस्कस कले. कापर कहली फेडरलिज्म ऊपर गोटे टॉपिक डिस्कस कले. Then e-boss ऊपर डिस्कस कले टॉपिक. Then your intersectionality. Right, basic political topic, but जति दरकार तापर मु कहछि. Then some important schemes. है ना. So that's all about this session.
आई एक्सपेक्ट समस्ते पढ़ुचंती बुझुचंती पाठ भल भाबरे एवं नोट्स करूचंती पुणी नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करबा इन द मीन टाइम कंप्लीट दिस क्लास एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स थैंक यू।